Hello and welcome to this new tutorial. This is the sixth part of Crown Rule in India, and before this we have covered up all of the five most important acts which Britishers have introduced in order to govern India under the Crown Rule. Now this is the sixth very important act, and this act is called Government of India Act of 1935. And all those previous acts which I have covered, you will find the link to those tutorials in the description box below as well as on I button. आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में। ये सिक्स्थ एक्ट है क्राउन रूल का इंडिया में, और इसके पहले मैंने 5 इम्पॉर्टेंट एक्ट को ऑलरेडी कवर किया है और उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन के ऊपर भी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं Government of India Act of 1935. The act marked the second milestone towards a completely responsible government in India. In fact, it was a lengthy and detailed document having 321 sections and 10 schedules. So when this act was got into the picture, or when this act was introduced, this act marked as a second most important milestone towards achieving the responsible government of India. And this act is also known for its lengthiest process as well as the detail act, wherein it contains 321 different sections as well as 10 different schedules. So therefore this act considered to be the one of the most important act when it comes to introducing responsible government in India. Well, so जब ये एक्ट को पास किया गया और भारत में इम्प्लीमेंट के लिए लाया गया, तो इस एक्ट को बहुत इम्पोर्टेंट नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जो एक्ट है 1935 का, जो आगे चल के जब भारत आज़ाद हुआ तो यही एक्ट एक बेस बना टू हैव अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। और बहुत सी चीज़ें जो इस एक्ट में है वो हमने वैसे ही इम्प्लीमेंट की है भारत आज़ाद होने के बाद। तो उसी मायने में ये जो एक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में कैसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, कैसे गवर्न किया, और आगे चल के ये एक्ट एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन कैसे बना। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आगे के जो 10 फीचर मैंने सिलेक्ट की है, ये 10 फीचर हमें हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. So let us take first feature. So it provided for the establishment of an All India Federation consisting of provinces and princely states as unit, and therefore the act divided the powers between the center and units in terms of 3 lists. The first list is considered federal list, which is for the center with its 59 different items. Second list is called provincial list. It is for all the provinces with 54 items. And the third is called concurrent list, and this list is for both with other different 36 items. Now this is the first very important feature which the Act of 1935 introduced, and here they tried to establish the All India Federation, and all the provinces including princely states would be a part of this Indian Federation. Now when it comes to the power will be divided between the center and various units, which are basically provinces as well as princely states. And this power would be divided into 3 different aspects. First is federal state with 59 items which would be controlled directly by the central government. Second is provincial list with 54 items only for provinces.
and the third was a concurrent list wherein both the center and state unit will work together on 36 different items. Now if you just understand the baseline here, then even today after independence we have the powers divided between the center and states. Although we don't call it a federal list today, we call it central list with certain amount of items. Second, we don't have something called provincial list because today we don't have provinces, rather we have states, and therefore provinces has become state with different types of items. And obviously the concurrent list still survives wherein both center and state is working together. So this is the first time when Britishers introduced this concept way back in 1935, and even today after independence we have retained this very important point wherein we understand how the powers are being shared between central and state. So therefore from that perspective 1935 act becomes most important aspect. जो सबसे पहला फीचर है इस 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के द्वारा एक ऑल इंडिया फेडरेशन की एक कल्पना की है, और इस ऑल इंडिया फेडरेशन में जो सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस है वो इसके हिस्सेदार रहेंगे। इसके साथ साथ सारे जो राजा और राजवाड़े है या प्रिंसली स्टेट है वो भी इसके पार्ट रहेंगे। और जब डिवीजन ऑफ पावर की बात आती है तो पावर सेंट्रल और बाकी यूनिट में डिवाइड किए जाएंगे। तो ये जो सारे पावर्स है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। पहला एक फेडरल लिस्ट बनाया जिसमें 59 आइटम्स रहेंगे और ये सारे आइटम्स सेंट्रल के पास रहेंगे। दूसरा जो लिस्ट होगा वो प्रोविंशियल लिस्ट कहलाया जाएगा। इसमें सारे प्रोविंसेस इंक्लूडिंग ब्रिटिश प्रोविंसेस एज वेल एज प्रिंसली स्टेट, राज्य, रजवाड़े ये भी एक साथ रहेंगे और उनको 54 आइटम्स दिए हैं। और जो थर्ड लिस्ट रहेगी वो एक कॉन्करेंट लिस्ट रहेगी जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर या सेंट्रल या और प्रोविंसेस मिलकर एक साथ काम करेंगे और इसमें 36 आइटम रखे हैं। ये जो आइटम्स है ये बेसिकली पावर्स है, सर्टेन पावर्स विच आर गिवन टू सेंट्रल, सर्टेन पावर्स विच आर गिवन टू प्रोविंशियल स्टेट्स एंड सर्टेन पावर्स wherein both center and state will work together। ये जो कल्पना की थी उस एक्ट के अनुसार ये आज भी हमारे स्वतंत्र भारत में है। आज भी हमारे देश में जब हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं बिटवीन सेंट्रल और स्टेट, तो हमें आज भले वो फेडरल लिस्ट ना हो के उसको सेंट्रल लिस्ट का नाम दिया है, तो आज हमारे पास सेंट्रल लिस्ट भी है, हमारे पास स्टेट लिस्ट भी है और हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट भी है। दिस इज़ अ वंडरफुल फार्मूला विच ब्रिटिशर्स हैड गिवन टू अस ऑब्वियसली वे बैक इन 1935। और ये जो फार्मूला था, जो पावर शेयरिंग था बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो आज भी हमारे देश में कायम है। सो उस नज़रिए से, उस पर्सपेक्टिव से 1935 एक्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट नींव है towards the constitutional framework of India. So moving on to the point number 2, the second most important feature here in Government of India Act 1935 is that it abolished dyarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in its place. Now under this, the provinces were allowed to act as autonomous unit of administration in their defined sphere of influence. Moreover, the act also introduced responsible government in provinces, that is, the governor was requested and was required to act with the advice of ministers responsible to the provincial legislature, and this came into effect in 1937 and was obviously discontinued in 1939. So the next very important aspect is that this act, the Government of India Act 1935, abolished dyarchy system, and they in a way introduced some kind of a autonomy to the provincial units या फिर प्रोविंस कह लो।
तो ये जो दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने 1935 एक्ट के अनुसार जो डायरकी प्रैक्टिस होती थी प्रोविंस में, उसको हटा के उन्होंने ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया। और इसके आगे चलते हुए हर एक प्रोविंस को ऑटोनॉमी मिलेगी और जो गवर्नर रहेंगे वो गवर्नर को उसके मिनिस्टर्स एडवाइस देंगे और ही हैज़ टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द advices which governor will receive from his minister। भले ये अच्छा कॉन्सेप्ट था कि प्रोविंस को उनकी खुद की ऑटोनॉमी दी थी, लेकिन आगे चलते हुए इसको हटाया गया। ये 1937 में इफ़ेक्ट में लाया और 2 साल के बीच 1939 में उसको वापस डिसकंटिन्यूड कर दिया। लेकिन एक अच्छी बात थी, फेडरल स्ट्रक्चर को अगर मजबूत बनाना था उस टाइम पर, तो उसके लिए ये मूव बहुत इम्पोर्टेंट था कि प्रोविंस को ऑटोनॉमी मिले ताकि वो अपना खुद का कामकाज करे, खुद जो चीज़ें उनके प्रोविंस में है उसको समझे और उसी तरीके से सिस्टम को फंक्शन करे। लेकिन आगे चलते हुए इसको हटाया गया और ये जो ऑटोनॉमी दी थी वो वापस ले ली गई। सो मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 3, इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी at the center। Now, although we have spoken about that dyarchy was abolished at a provincial level, whereas the dyarchy was introduced at central level. Consequently, the federal subject was divided into reserve subject and transfer subject. However, this provision of the act did not came into operation at all. Although they made a point to introduce the dyarchy at the center, but again it did not happen effectively. The operations of such kind of a system never took place, and therefore this provision was not even implemented at the center. Although they were trying their best to divide the federal subject at the central level with reserve subject and transfer subject, which we have spoken about in last tutorial, how these powers were given to the provinces under the so-called reserve subject and transfer subject. So they are trying, rather they tried their best to implement it at the center, but it never happened। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इस एक्ट का कि ब्रिटिश सरकार ने प्रोविंशियल लेवल पे तो डायरकी ख़त्म कर दी और ये डायरकी उन्होंने वापस सेंट्रल में ला दिया। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरकी? तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि डायरकी क्या होता है। डायरकी बेसिकली 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ एट द सेंटर। जैसे एक टाइम पे प्रोविंशियल लेवल पे 2 अथॉरिटीज़ थे, एक गवर्नर हुआ करता था विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और दूसरा था गवर्नर विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसी तरीके से ये डायरकी उन्होंने सेंट्रल में लाने की कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4, इट इंट्रोड्यूस्ड bicameralism in 6 out of 11 provinces। Thus, the legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, and United Provinces were made bicameral, consisting of legislative council, which is basically upper house, and a legislative assembly, which is lower house। So as we have spoken about in last tutorial, Britishers had introduced bicameralism at center. Now here they are also trying to introduce similar kind of a system, which is bicameralism, wherein you'll have the upper house and lower house. They also try to introduce this in 6 provinces out of the total 11 provinces of that time. And which were those provinces? These provinces were basically Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, and United Provinces. And with this, they introduce upper houses, that is legislative council, and lower house, which is legislative assemblies, in all these 6 provinces. So this act again is very important from a perspective of bicameralism at
प्रोविंशियल लेवल। चौथा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फीचर है इस एक्ट का, कि यहाँ पर ब्रिटिश ने बाइकैमरलिज्म को प्रोविंशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की और आउट ऑफ 11 6 प्रोविंस में ये बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। मतलब ये जो 6 प्रोविंसेस है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंसेस, यहाँ पर भी उनके अभी अपर हाउस रहेंगे और लोअर हाउस रहेंगे। सो दिस वाज एन अटेम्प्ट which Britishers did under this Government of India Act of 1935. Next, point number 5th, it further extended the principle of communal representation by providing separate electorate for depressed classes such as scheduled caste, women and labor, especially working class. So this 5th very important features basically talks about the principle of communal representation, and we have seen subsequently in my last tutorial how Britishers have introduced this principle of communal representation, first with Muslims, then in last tutorial we saw that they have given it to various other communities including Sikhs, Europeans in India, as well as Anglo-Indians. So similarly now they want to extend this principle of communal representation to depressed classes, and these depressed classes are basically the scheduled caste, women and labor class. So this was one more very important point to understand why and how the Government of India Act 1935 considered to be the most important milestone in India. पांचवा जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया था वो आज डिप्रेस क्लास को भी देना चाहते हैं। जैसे हमने देखा कि पहले कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया था मुस्लिम को स्पेस देने के लिए, उसके बाद बाकी कम्युनिटी को भी दिया गया जैसे सिख्स, एंग्लो इंडियंस एज वेल एज यूरोपियंस इन इंडिया। अभी उनकी कोशिश थी कि ये डिप्रेस क्लास को भी एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। ये जो डिप्रेस क्लास थी ये बेसिकली शेड्यूल कास्ट, वीमेन और वर्किंग क्लास को देना चाहते थे, और इसी नज़रिए से ये एक्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 6, इट abolished the Council of India which was established by the Government of India Act of 1858. The Secretary of State for India was provided with a team of advisors. So basically it was established under the Government of India Act of 1858, and now there won't be any Council of India, whereas the Secretary of State for India would be given a team of an advisor so that he can carry out his own function. 6 जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि इस एक्ट के अनुसार जो काउंसिल ऑफ इंडिया को जो एस्टैब्लिश किया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, उसको अभी हटाया दिया, उसको एबॉलिश्ड किया, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के उसको अभी सेपरेट टीम दी जाएगी एडवाइज़रों की। पहले कैसा होता था कि ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया जो बना था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करते थे, अभी इसको हटा दिया है। तो क्वेश्चन ये था कि अभी काउंसिल अभी सेक्रेटरी फॉर इंडिया को एडवाइस कौन देगा, तो इसके लिए सेपरेट टीम ऑफ एडवाइज़र भी बना दी थी। सो उसी नज़रिए से ये जो ओल्ड सिस्टम था उसको अभी खारिज कर दिया, उसको हटा दिया और नया सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। It extended franchise and about 10% of the total population got the voting right. So under this new act of 1935, they introduced and they extended right to vote to 10% of the total population. That means now at least 10% of the total population of India of that time will get right to vote. And again, the criteria to vote remains the same as we have discussed about in last tutorial.
सातवां जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस एक्ट के अनुसार जो राइट टू फ्रेंचाइज थी, राइट टू वोट था, वो अभी 10% जो हमारा पॉपुलेशन था उस टाइम पर उनको दे दिया। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। स्लोली लोगों को अधिकार मिलने लगे, स्पेशली राइट टू वोट का। भले उस टाइम पर इलेक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं होता था जैसे आज है, बट दिस वॉज अ स्टार्टिंग पॉइंट which gave Indians at that point of time a touch to understand what is right to vote and how right to vote can change the entire future of the country. So therefore this act is very important. Feature number 8, it provided for the establishment of a Reserve Bank of India to control the currency and the credits of the country. Again a very important milestone, because with this act we finally got a Reserve Bank of India whose responsibility would be to control the currency and the credit of the country. And with this perspective we need to understand and accept that 1935 act was therefore a milestone in evolving the administration and constitution of India. आठवां जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी जो ड्यूटी थी वो बेसिकली टू कंट्रोल द करेंसी, और जो देश का जो क्रेडिट रहता है उसको कंट्रोल में रखना। और उसी मायने से और बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से दिस एक्ट देयरफॉर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। फीचर नंबर 9, it provided for the establishment of not only a federal public service commission but also a provincial public service commission and joint public service commission for 2 or more provinces. So the way we have studied in last tutorial, the British introduced something called Public Service Commission or Union Public Service Commission. Similarly, they now under this act also introduce something called Provincial Public Service Commission. That means now we will have Central Public Service Commission as well as Provincial Public Service Commission to take care of the provinces, and therefore this act is again considered one of the most important act in evolving Indian Constitution. नौवां जो बहुत important point है कि इस एक्ट के अंतर्गत अभी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी उदय होगा। ये शुरुआत होगी ताकि हर एक प्रोविंस इसके अंतर्गत हर एक प्रोविंस अब अपने खुद के नुमाइंदों को सिलेक्ट कर पाएंगे ताकि वो लोग अपने प्रोविंस के लिए काम करेंगे। और उसी की नज़रिए से प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये आज भी हमारे स्वतंत्र भारत में है। भले उसको हम प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बोलते हैं, उसको हम स्टेट वाइज उसको दिया है। जैसे महाराष्ट्र में रहेगा महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, कर्नाटक में रहेगा कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर गुजरात में देखो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। सो नेशनल की बात अलग रहेगी और स्टेट की बात अलग रहेगी, क्योंकि स्टेट का भी अगर कामकाज कराना है तो हर एक स्टेट को अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा। और इसकी जो बुनियाद थी वो 1935 एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने दी थी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से, जिसे आज हमने रिटेन किया है और उसको स्टेट वाइज की तरफ से नाम चेंज किया है। सो इसीलिए ये एक्ट एक बार फिर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट्स which was set up in 1937. With this act, British government introduced and established federal court system in India, and these federal court system were established in 1937. The justice was taken care of primarily by kings, monarchs, or governors for that matter, as and when the cases were heard. But for the first time, we now will have
a federal structure of a court system. That means we'll have a Supreme Court, we'll have a High Court, we'll have a District Court. Today we have it, but in those days it was a starting point in 1937 when they established a federal court for India. 10वां जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है कि कोर्ट की स्थापना की। इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक जस्टिस देने का एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया और ये एस्टैब्लिश हो गया 1937 में, और उसके बाद बहुत से चेंजेस होते गए और आज के भारत में हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हमारे हाई कोर्ट्स है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, ताकि जो जस्टिस है वो सबको मिले। और उसकी जो इसकी जो बुनियाद थी वो 1935 एक्ट में उसको इंट्रोड्यूस किया। अगेन लेट मी मेक इट वेरी क्लियर दैट इवन बिफोर 1937 we had courts, no doubt about it, but it was not federal in structure. Only certain cities will have the court system, but here they tried to cover up larger section of India. So यही बहुत important बात हमें समझनी है कि इस एक्ट के अंतर्गत सारे शहरों में सारे जो बड़े बड़े शहर है उस टाइम के या फिर आज के तारीख में जो बड़े बड़े स्टेट्स है, हर एक स्टेट में उनका कोर्ट रहेंगे ताकि हर एक सिटीजन को न्याय मिलने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। सो उसी आधार को लेके फेडरल कोर्ट played a very very important role in evolving justice system in India. So this is all about the Government of India Act of 1930. I hope you have understood the Government of India Act of 1935, and in next tutorial we shall talk about the last very important act of Crown rule, and that is Indian Independence Act of 1947. Till then, take care.